ये जो जजमेंट है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सत्येंद्र वेदर जी की कोर्ट सिंगल बेंच से आया है, इसमें जो मेन ग्राउंड्स जो अलेज किए गए थे वो था द स्पेसिफिक केस ऑफ पटिशनर इज दैट दो देयर इज नो प्रोविजन फॉर रिलैक्सेशन इन द एक्ट rules or IDP to allow construction of additional stories and to exempt in maintenance of the requisite setbacks, yet respondent number 1 to 5 have proceeded to sanction the proposed construction plan of the society by granting the relaxation dehouse the provisions of Act, rules and IDP. Petitioner has alleged that during the course of raising construction, the society has thrown huge debris and boulders on the adjoining land and has already caused deconstruction and damage to the substantial portion of the land of the petitioner. Petitioner further alleged that the cutting of the hills were being done by the society in excess of the required parameters. The forest wealth was also subjected to the destruction. ऑनरेबल कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा जो प्रिंसिपल लॉ का है उसमें उसके बारे में ये पैरा 13 में कहा है, सोसाइटी रिक्वायर्ड प्रायर प्लानिंग परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटी बिफोर स्टार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऑफ द लैंड. द परमिसिबल नॉर्म्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड in the rules of chapter so and so. It is not in dispute that as per prescribed norm, FAR of only 1.75 is permissible. Floor area ratio means the ratio between the net plot area and total floor area of all the floors of the building. The limits of setbacks on all four sides have also been prescribed. और अप्लाइंग द प्रिंसिपल लिफ्टिंग ऑफ वेल जो है ऑनरेबल कोर्ट ने पैरा 21 में कहा है, इन द अबव noted background, it become necessary to lift the veil and to find out the reasons behind commission of patently illegal acts by the instrumentalities of the state. For such an exercise will have effect on the final outcome of the instant case. और इसमें जो है पैरा 28 में ये कहा कि जो डिसीजन है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने नहीं लिया, यानी कि इसमें जो स्टेट है वो कॉम्पिटेंट नहीं थी, बल्कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी उन्होंने ये डिसीजन लिया, बल्कि ये डिसीजन उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऊपर जो है स्टेट ने इम्पोज किया है. Thus, there remains no doubt that instead of decision being taken by the authority, the state government had taken the decision of granting relaxation to the society, which not only was without jurisdiction but was also arrived at in the most casual manner. और पैरा 31 में जो है कैटेगोरिकली इन्होंने कहा कि इन सच लाइक सिचुएशन as noticed above, the state government has not been invested with any authority to grant planning permissions or to relax the prescribed norms. और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल प्रोपोजिशन इसमें डिस्कस हुई है वो पैरा 32 में इसमें कहा गया कि इट इज मोर देन सेटल्ड दैट इफ ए स्टैट्यूट रिक्वायर्ड फॉर एनीथिंग टू बी डन इन ए पर्टिकुलर मैनर, इट शुड बी डन इन दैट मैनर और नॉट एट ऑल. अगर उसके बाहर किया है, स्टैट्यूट के प्रोविजन से बाहर किया है, तो वो जो है एक्शन किसी भी अथॉरिटी का ऐसे ही इलीगल हो जाता है. जो ऑब्जर्वेशन इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने किए पैरा 35 में वो कहा है, दस दिस कोर्ट हैज नो हेजिटेशन टू होल्ड दैट नीदर द अथॉरिटी नॉर द स्टेट गवर्नमेंट हैज एनी पावर or jurisdiction to relax the prescribed norms save and except the powers vested in director by virtue of clause so and so, which is available in the case of a public interest or in the interest of town design only. अल्टीमेटली इसमें जो है कोर्ट की जो डायरेक्शन आई है पैरा 49 में आई है वो है डायरेक्शन नंबर 1, the relaxation granted in floor area ratio and setback areas in the case of respondent number 7 by respondent number 1 and 2 on 2nd December 2016 is held to be without jurisdiction and hence illegal. Consequently, the planning permission granted by respondent number 5 on 6 April 2017 is also held invalid to the extent it exceeds the permission limits of a floor area ratio and setbacks. Respondent number 5 shall be under direction to revoke the planning permission dated 6 April 2017 granted in favor of the respondent number 7 within 8 weeks from the date of passing of this judgment, so as to bring the planning permission strictly within the prescribed norms as per the provision of the Act, rule and do. जो थर्ड डायरेक्शन है, respondent number 5 is further directed to take necessary steps under section 39 of HP Town and Country Planning Act 1977 and any other applicable provision of law in respect of the construction, if any already raised by the respondent number 7 in excess of permissible limit,
प्रेस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट रूल्स एंड आईडीपी। ये एक बहुत ही अच्छी जजमेंट आई है। अदरवाइज हम देख रहे हैं कि बड़े हैपाजार्ड मैनर्स में जो है कंस्ट्रक्शन होती है, डेविएशन होती है, फिर वो किसी तरह से वो मैनेज कर लेते हैं उसको और इलीगली जो है कर लेते हैं। ये एक डिसीजन जो है एक एनडीपीएस में जो आया, इसमें एक क्रिमिनल अपील थी और